Hi, I'm Mrs. Renu Talreja. Today we'll be studying past indefinite or simple past tense. Always remember, the past is your lesson, the present is your engine, the future is your motivation. The past tense is used to express the actions already taken place or the states of being that existed before the time of speaking. Or we use the past tense to talk about actions and experience that took place at some time during the past. इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है. ऐसे वाक्यों के अंत में आ या ई, यो या ता था, ते थे, ती थी आदि आते हैं. To understand it, look at this graph. Past, present, future. Past and present, no link. We saw a suspense movie last night. जैसे हमने कल रात सस्पेंस पिक्चर देखी थी. पिक्चर देखने का कार्य व कल दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, अतः यह सिंपल पास्ट टेंस है. नाउ अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस. सकारात्मक वाक्य. सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, अमन एंड अमिता went to school every day. We went to a hotel for dinner. She sang melodiously. ऐसे वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है. Some learners find it difficult to remember the past form of verbs, especially irregular verbs. They add ed to form past tense of the irregular verbs. Examples: Mother bought a new microwave yesterday. Not buyed, bought. Garima evenly spread the butter on the slice of bread. Not spreaded, spread. Now negative sentence. Subject plus did plus not plus first form present form of verb. पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, किंतु पास्ट टेंस के वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही बदलेंगे. We did not always first form of verb is used. Many times I've heard students say, I did not brought my book. That's incorrect. I did not bring my book is correct. Interrogative sentence. In interrogative sentence, the form is did plus subject plus first form of verb and question mark. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य सदैव डिड से आरंभ करें, डिड के बाद सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएं. डिड इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, डिड अमन एंड अमिता गो टू स्कूल एवरी डे? डिड वी गो टू hotel yesterday? Did she sing melodiously? Now interrogative negative sentence. Did plus subject plus not plus first form of verb and question mark. Interrogative negative sentence is formed just like interrogative sentence. Difference is not is used after the
सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है, फिर सब्जेक्ट कर्ता के बाद नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते और प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। डिड ही नॉट ईट? डिड अमन एंड अमिता नॉट गो टू स्कूल? डिड वी नॉट गो टू होटल yesterday? Now we'll see difference of simple past and present perfect. We use simple past to express an action which took place at some moment in the past and is not linked with the present. I purchased a personal computer last year. The action of purchasing the computer has no link with the present. But if the action is linked with the present, we express it in the present perfect tense. I have purchased a personal computer. So, I can work much faster now. Now, note, we should not use any time expression denoting the past time with the present perfect tense. Example, our school has won the tournament last year. That's wrong. Say, our school won this tournament last year. Now, uses of simple past. We use the simple past tense to express actions finished before the time of speaking. इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में होने वाले कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Example, he wrote a novel last year. India became free in 1947. Next, to indicate a habit or a regular action of the past. ये भूतकाल की आदत को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। Example, Madan always sang in the morning. My grandfather liked a cup of hot milk at bedtime. Next, to narrate a story. कहानी सुनाने के लिए, कहानी का वर्णन करने के लिए। The four friends lost their way in the dense jungle. There lived an old witch in the village. Now, use of used to. Used to का प्रयोग भी भूतकाल की आदत बताने के लिए होता है, परंतु भूतकाल में होती रही हो लेकिन वर्तमान में नहीं। जैसे when he was young, he used to play cricket. Used to suggest that something was true for some period in the past but stopped being true later. Mr. Roy used to smoke means now he doesn't smoke. Now, adverbials used in the past tense sentences. Last night, last year, last month, last week, long ago, some time back, yesterday, once, in 2006, 2010, etc. Thank you.